So today we are going to begin with the lesson number 5 of your class 4 English, that is noble deeds never go waste. So let's begin with this lesson. Hasimpur was a small village on the outskirts of a forest. Outskirts of forest में क्या था? हसीमपुर एक छोटा सा गांव था. A farmer named Nehal Singh lived in that village. एक farmer थे Nehal Singh, वो उस village में रहते थे. He was a big landlord. वो कौन था? एक बड़ा लैंडलॉर्ड, एक बड़ा जमींदार था. He had plenty of lands. उसको बहुत सारे lands थे. Many men used to work in his fields and grew crops for him. बहुत सारे लोग उसके fields में work करते थे और उसके लिए crops को grow करते थे. He was very rich and prosperous. वो बहुत ज़्यादा rich था, बहुत ज़्यादा अमीर था. However, Nehal Singh was much proud of his riches. उसने बहुत ज़्यादा घमंड था अपने riches का. He never used to behave well with his servants and even talked rudely to the people who used to come to him for any help. और वो कभी भी अच्छे से behave नहीं करता था अपने servants के साथ, अपने नौकरों के साथ, और कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था जो भी लोग उसके पास help के लिए आते थे, और बहुत rudely behave करता था. One evening, Nehal Singh was standing in front of his house. एक दिन Nehal Singh उसके house के front में खड़ा हुआ था, सामने खड़ा हुआ था. He was looking at his field full of crops. वो अपनी fields को देख रहा था जो किससे full थी? Crops से full थी. And was thinking something, और उसको सोच रहा था. Just then, a stranger came to him. एकदम एक stranger अजनबी आदमी उसके पास आता है. The man was shabbily dressed, and it appeared that he was in great pain. Man बहुत गंदी तरह से dressed था. और उसे मतलब दिख रहा था उसे देख के कि वो बहुत ज्यादा पेन में दुख में है. He bowed to Nehal Singh and said, "Sir, I am hungry and thirsty." उसने वो करा Nehal Singh के आगे, बोला, सर मैं बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा हूँ. I have nothing to eat or drink since morning. सुबह से मेरे पास कुछ नहीं है खाने और पीने के लिए. Will you please give me something to eat and some water to drink? क्या आप मुझे कुछ दोगे खाने पीने के लिए? कुछ पानी दोगे पीने के लिए, कुछ खाने के लिए दोगे? Nehal Singh was not in good mood at that time. वो अच्छे मूड में नहीं था Nehal Singh उस टाइम. He lost his temper and said to him rudely, "You people have made begging a profession." वो rudely बोला दूसरे beggar से, तुम लोगों ने इसको begging को एक profession बना लिया है. You look so hale and hearty and can easily earn your livelihood by working. तुम बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लग रहे हो, तुम easily earn कर सकते हो अपनी livelihood. खाने पीने की चीजें अपना रोजाना खर्चा आराम से अर्न कर सकते हो. But you are not ready to do that. But तुम ready नहीं हो करने के लिए. Get away from here. I have nothing to give you. यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए. The stranger was stunned at this rude behavior, but without uttering even a single word, he left the place. Stranger बहुत ज़्यादा shocked था उसके rude behavior से, but उसने कुछ बोले बिना वो वहाँ से चला गया. After some days of this incident, Nehal Singh had gone to one of his relatives house who lived in another village on the other side of the forest. एक दिन क्या होता है, इस इंसिडेंट के बाद नेहल सिंह अपने एक रिलेटिव के पास जाते हैं जो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट के दूसरे कोने में आउटस्कर्ट्स में रहते थे. So it was already getting dark when Nehal Singh left his own house after meeting his relative. So बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था जब वो अपने रिलेटिव से मिलके निकले अपने घर के लिए. While passing through the forest, he lost his way. जब वो पास कर रहे थे फॉरेस्ट में, अंधेरा हो गया था, वो अपना रास्ता भूल गए. Soon it was dark all round and he did not know which way to go. हर जगह अंधेरा हो गया था, उनको नहीं पता था कि किधर जाना है. With the fall of the night, the silence of the forest was broken by the frequently frightening sound of strange animals. जैसे जैसे रात हो रही थी, मतलब silence broke कर रहा था इसके strange animals की आवाज के साथ. Nehal Singh became afraid. Nehal Singh डर गया. He realized that he had to spend the night inside the forest. He realized that उसको by night spend करनी पड़ेगी forest में ही. So, but where there was no shelter around, and if he spent the night in the open, he was surely to be attacked by some wild animals. But वो सोच रहा था मैं कहाँ करूँ? अगर मैं खुले में करूँगा night spend तो पक्का मुझे कोई wild animal attack कर देगा. Suddenly he saw dim light at some distance. एक छोटी सी लाइट देखी जो दूर से आ रही थी. Nehal Singh became a little hopeful and went towards the direction. Nehal Singh को थोड़ी hope आई और direction की तरफ गया. At last he reached a small hut in the middle of the forest. एक छोटी सी hut पे पहुंचा वो, कहाँ पे? Forest के बीच में. He was hungry, thirsty and tired. Hungry था, thirsty था और tired था. He hoped to get something to eat and shelter for the night there. उसको होप थी कि मुझे कुछ चीज मिलेगी और शेल्टर मिलेगा नाइट के लिए यहाँ पे.
He knocked at the door from outside and waited anxiously. उसे knock करा बाहर से और वहाँ wait करने लगा. Soon the door opened and a man came out. जैसे ही door खुला, बाहर आया. Nehal Singh could not see his face in the dark. Nehal Singh उसका face नहीं देख पाया अंधेरे में. I am stranger. I have lost my way in the forest. Can I have a shelter here for the night? He asked hesitantly. उसने हेजिटेंटली पूछा, मैं एक अजनबी हूँ, मैं यहाँ पे रास्ता भूल गया हूँ, क्या मैं अपनी नाइट स्पेंड कर सकता हूँ यहाँ पे? The owner of the hut called him in. Owner जो था उसने उसको अंदर बुलाया नेहल सिंह को. In the faint light of the lamp, Nehal Singh tried to look at the face of the owner. धुंधली सी लाइट में नेहल सिंह ने कोशिश करी ओनर के फेस को देखने की. I think I have seen him earlier. नेहल सिंह ने सोचा मेरे को लगता है मैंने इसे कहीं पहले देखा है. But she could not remember where. But वो याद नहीं कर पा रहा था कहाँ पे. The owner of the hut said, I am lucky to have you at my place. A guest like God. A guest is like God. तो मैं खुश हूँ आपको अपने घर में पाके. और एक जो गेस्ट होता है भगवान की तरह होता है. Please take your seat and I am arranging some food for you. Please अपनी सीट लो और मैं आपके लिए थोड़ा सा खाना अरेंज कर देता हूँ. Nehal Singh was overwhelmed at the kindness of the host. खुश हुआ kindness से वो host की. Very soon the owner arranged some food for him, offered him own bed to sleep on. उसने फिर food दिया खाने के लिए और अपना बेड दिया सोने के लिए. Early next morning when Nehal Singh got up from his sleep, जैसे Nehal Singh अपनी sleep से उठा, नींद से उठा, the man was ready with his breakfast. Man ready था breakfast के साथ. When he finished his breakfast, the owner led him out, showing the way out of the forest. जैसे उसने अपना breakfast finish करा, owner उसे बाहर ले गया रास्ता दिखाने के लिए forest का. Just as he saw he was about to go, जैसे वो जाने वाला था, Nehal Singh recognized his kind host. उसने एकदम पहचान लिया अपने kind host को. It took him no time to recollect that it was the same poor man who he had unkindly turned away from his door. उसे थोड़ा भी टाइम नहीं लगा पहचानने में कि ये वही आदमी है जिसको उसने अपने घर से भेज दिया था बिना खाना और पानी दिए अपने घर के दरवाजे से. Nehal Singh was filled with remorse and a feeling of guilt. उसे एकदम गिल्ट फील होने लगा बहुत ज्यादा Nehal Singh को. He hung his head in shame and begged to be pardoned. उसने सर नीचे झुका लिया शर्मिंदा होके और माफी मांगने लगा. You have opened my eyes. तुमने मेरी आँख खोल दी है. Never again in my life shall I refuse food and shelter to a poor man. मैं कभी भी फूड और शेल्टर रिफ्यूज नहीं करूंगा गरीब आदमी के लिए. You have made me feel so sorry for my harsh words and unkind behavior in the past. तुमने मुझे सॉरी फील करा दिया मेरे unkind behavior और harsh words के लिए जो मैंने पास्ट में बोले थे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.